Good morning, everyone. Welcome to Prebal with Team William Unil India. Today, 5th March 2024. And a clear disclaimer, please go through it. Okay, so as you can see, the Nifty setup quite good. It is trading at a fresh high, and there's no major resistance that's on the higher side, but there is a decent support near 22,000 on the lower side. Because if you see the last Friday when Nifty was up around more than 1.5%, and that also the low was near to 22,000, and similarly the 21 DMAs also came near the 22,000. So now I think in the market, 22,000 becomes very important level. On the higher side, the most important is always the to move above the high of previous day. अभी कल जो हमने एक fresh high बनाया था निफ्टी में, that was 22,440.9. ठीक है, तो आज वो 22,440 के ऊपर एक बार हम जाएंगे, then I think the next stop will be around 500, 22,500, and above 22,500 we might get some very positive momentum. सो ब्रॉडली अभी 22,450 हायर साइड में देखना इम्पोर्टेंट हो जाता है. And on the lower side, the 22,000 will give a very good support in the March series. So March series के अगर फोकस से कोई देख रहा है, then 22,000 is very important level on the downside as a stop loss. बाकी डिस्ट्रीब्यूशन डे काउंट अगर देखो, सो डिस्ट्रीब्यूशन डे काउंट इज टू आइडेंटिफाई द टॉप्स कि भाई बहुत ज्यादा अगर डिस्ट्रीब्यूशन डे काउंट बढ़ जाते हैं, दैट मींस मार्केट इज नियर द टॉप. बट अभी का अगर आप सिनारियो देखे तो डिस्ट्रीब्यूशन डे काउंट कम होके सिर्फ दो हो गए. लास्ट वीक वो चार थे, इस वीक वो दो हो गए, क्योंकि हर 25 सेशन के बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन डे एक्सपायर हो जाता है, उसका वैलिडिटी खत्म हो जाता है. अगर लेमन टर्म्स में कहूँ तो उसका इम्पैक्ट अभी नहीं रहता है मार्केट में. तो ऐसा देखो तो सिर्फ अभी दो डिस्ट्रीब्यूशन डे है, एंड वी आर वेरी कंफर्टेबल. दो डिस्ट्रीब्यूशन डे कोई इतना मेजर प्रॉब्लम नहीं है अगर आप 21 और 50 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहे हो. ओके, नेक्स्ट की न्यूज में देखे तो एफआईआई का नेट सेलिंग था, वाल डीआईआई का एक मेजर नेट बाइंग था. मोर देन 3,500 करोड़ का नेट बाइंग किया था डीआईआई ने. एनटीपीसी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी has signed a JV with यू उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम for renewable parks. Tata Motor, this is the big news. The Tata Motor has announced that it will demerge its business into the two companies. Firstly, that will be one will be focused on the commercial vehicles and other will be specialized in passenger vehicles. So there will be two separate companies. Okay, then Easemytrip and PNB has collaborated to introduce a PNB EMT co-branded credit cards, and there are some other news as well, like NBCC's arm HSCC gets order worth rupees 92 crore. Okay, and Defense Ministry has signed MOU for development of advanced fueling and control system. ओके, जब एडवांस फ्यूलिंग एंड कंट्रोल सिस्टम अगर डिफेंस मिनिस्ट्री साइन करती है, देन बीईएल, बीईएमएल, मितानी, ये सब के लिए पॉजिटिव है. एंड आईएक्स का अगर फेब्रुवरी का वॉल्यूम का डेटा आ गया, देन इट इज अप 15% YOY. ग्लोबल मार्केट ब्रॉडली सुस्त है, बट लिटिल बिट ऑन द नेगेटिव साइड. It's a lazy on the negative side. So Dow minus 0.3%, S&P almost flat, Nasdaq 0.4%. In Asia also, Shanghai is almost flat, while Nikkei is down 0.4%. But the way the Nasdaq को अगर देखो, निक्की को देखो, तो वो जिस तरह से बढ़े थे उस तरह से 0.3 0.5% कुछ बड़ी बात नहीं है, छोटा मोटा इधर उधर पुल बैक. सो देर आर नो मेजर नेगेटिव क्यूज फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट. हल्का सा सुस्त
ओपनिंग एक्सपेक्टेड है, एंड दैट्स व्हाट द गिफ्ट निफ्टी इज इंडिकेटिंग। 474 का अभी लेवल है गिफ्ट निफ्टी का, दिस इज फ्यूचर लेवल। येस्टरडे वी क्लोज्ड अराउंड 500, सो 30-40 पॉइंट इधर उधर, मोस्टली ऑन द नेगेटिव साइड एक्सपेक्टेड, but let's see how the things goes on, but here also there is no major momentum at the opening expected। अभी देखो तो वैसे भी रेंज छोटा होता जा रहा है, मार्केट लेवल पे द रेंज इज गेटिंग लोअर। Stock of the day, the chart of the day, the CDSL. Here the setup is really good. It has formed a double bottom base. इसका earnings अच्छा है, number of fund holding has increased, and look at the strength, EPS strength of 94, price strength of 66. थोड़ा नीचे जा रहा है, but as we break out, it will improve. Buyer demand is of A, and group rank is also among top 50. अब इसमें हो क्या रहा है कि एक बार ब्रेकआउट हो गया था, बट उसके बाद ये ऊपर जाने को स्ट्रगल कर रहे हैं, बट आई थिंक नाउ द कंसोलिडेशन अभी काफी कंसोलिडेट कर दिया है इसने, सेलिंग लोअर वॉल्यूम पे आ रहा है, और जब भी थोड़ा बाइंग आता है उसमें वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। सो आई थिंक द कंसोलिडेशन और एक्यूमुलेशन वाला फेज है वो भी चल रहा है। द स्टॉक इज वेरी नियर टू 21 डीएमए, सो दैट्स अ वेरी सेफ कि अगर ये जोन के अराउंड आप ब्रेकआउट पे लेते हैं, देन 21 डीएमए इज जस्ट 2-3% फ्रॉम हियर, एंड 50 डीएमए भी अगर आप ब्रॉडली देखो तो 5% है यहाँ से, 5-6% है ब्रेकआउट से। सो द स्टॉप लॉसेज आर वेरी नियर, एंड वंस द स्टॉक्स ब्रेक आउट on a higher volume, it can be considered in the ideal buy zone according to the O'Neill methodology. So अगर आपका रिसर्च या आपका एडवाइजर परमिट करता है, then whenever the stock crosses 1918 का level, then that falls into the ideal buy zone। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, 2-3 बार ये ऊपर आया था, बट ये नीचे आता जा रहा है। सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू वेट फॉर सम हायर वॉल्यूम एंड क्लोजिंग। अगर यहाँ पे मिल जाता है हमको 1950 के ऊपर, ठीक है, अभी जो रिसेंट डे के हाई पे क्लोजिंग नहीं मिला, वो क्लोजिंग एक बार हमको मिल जाता है अराउंड 1950, ब्रॉडली से 1950 के ऊपर, देन द स्टॉक विल बी मोर सेफ। बाकी स्टोरी वाइज देखो, सीडीएसएल जैसे जैसे इंडियन मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है, पेनिट्रेशन बढ़ता जा रहा है, द सीडीएसएल विल डेफिनेटली गेट द बेनिफिट ऑफ इट। So that's it for today's session. Thank you for joining. See you again tomorrow at 8:45 a.m.